Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, continuing in today's session with few more methods of array. Like yesterday, we stopped with every. So there are few more methods of array that we will continue today. Next is sum. Sum is complement of every. Like what every does, it tries to apply the test on each and every element. And if each and every element satisfy that test condition, it returns true. And if your test condition is not true for each and every element, then it returns false. Like in this case, this test is not true for 5. It was true for 2, for 4, but not for 5. Therefore, returned false. Opposite of that is sum. Sum is like or, and every is like and. Okay, so sum just checks whether the elements satisfy your test condition. If any of the element in the array, any element, not necessarily everyone, if any element in the array satisfy the test condition, you'll get true. And if none of the elements satisfy, then false. तो array में से एक भी अगर element वो टेस्ट कंडीशन पास कर देता है, it will give true. यहाँ हर एक एलिमेंट ने टेस्ट कंडीशन पास करने की जरूरत नहीं. Understanding? That is the opposite. So the sum method checks if some array values pass a test. Okay? Example, this is your array of numbers. Your test condition is what? This is your arrow function. Remember, this is an arrow function. One argument arrow function. Num is an argument, and this is the action or the body of your arrow function. You're just passing the reference of the arrow function to sum. Sum will call your arrow function again and again. It is a callback function. Callback means it is going to get called implicitly again and again. We are not calling it, we are just defining. So sum will give call to this arrow function for each value in your array. And for any one value, if it returns true, it directly returns true. So for the first case, like for 3, sorry, for 1, it is false. So it will check for 3, false, 5, false, for 8, true. For 1, at least 1, it is coming true, it will give you true. Understanding? The same thing if you try to do it for every, in that this test condition should be true for each and every element. For some, this test condition should be true for any one value. But if it is not true for a single value also, then obviously it's going to return false. Okay? Now we can take example, this one yesterday, which we did. Okay, console.log names one dot sum. Okay, someone has kept mic on mute only, I guess. Just check this. Or if you want to ask something, you can ask. Yeah, you're checking that whether at least one element in my list is of length 3. At least one. एक भी रहेगा तो भी मुझे true मिल जाएगा. Getting? See. Is it giving true? For the every case, it is giving false. Because is every one of 3 length? Ram, Bob, Tim, Tom. They are, but Bill is not. Understanding? Here, if I make Bill as BIL, it will give true. Why? Because every one is of 3 length. So the condition has to be true for each and every one. Condition has to be true for everyone. And for some, the condition is to be true for any one value. Okay? Check. For both, it is giving true. Now, in this case, for some, suppose I'm giving greater than 5.
So is there any one name in the list which is greater than 5? At least one, not a single one. Therefore, for some, it is giving false. Getting guys? एक भी अगर आपने 5 के above रखा रहेगा, like REMESH, but no, रामेश्वर लेता हूँ. Okay, so do we have at least one which is satisfying this criteria? Yes, you're getting true. So I hope you got it. The concept is clear to you guys. Every and any. Okay. Then next is some methods are there which returns you the index of your array. So this is array.keys. Array.keys return only the indexes of your array. Whatever elements are there, 5, 2, 9, 20, whatever. So every element is going to have an index. So this returns only the index part, but that all indexes come in the form of a iterator. And that iterator, you have to use it in a for loop to get these values. Okay, so keys will return only the keys part. Then we have dot values also, which I have not shown on the slide, but remember, there is one method called dot values. It will return only the values in your array, 5 to 920. And there is one more called entries. Okay, entries will return a list of list, in which every list will contain the index and the element 0, 5, like this, 1, 2, 2, 9. Okay, but they all come in one iterator, and then that iterator you have to use it in a for loop to get these values one by one. If you want these values one by one, then you have to use that in a iterator. You cannot directly print it. If you print, it will just tell that it's a iterator object. Okay, I'll tell you. So array.keys method returns an array iterator object. Whenever you are having an iterator object, you have to use it in a for loop to extract one by one value. Iterator acts like a pointer, which is pointing to some group. And as you go on traversing, that pointer keeps pointing to the next element. Okay? So directly, if you print that answer, you'll get a iterator object. But if you use that iterator object in a for loop, you'll get one by one keys. I'll show you with the keys of an array. Then entries. Again, it will return one iterator object, but in that, what will be there? List, you can say array of array, like this, array of array. And in that, each array will contain the key and the value. Key means the index and then the value. Index and then the value. Okay. And this iterator also, if you use in a for loop, you'll get this one by one. Okay. And entries method returns an array iterator object with key value pairs. And one more we have, that is values, which I have not shown. Values will return only the values part. Again, a iterator object only. So I'll show you that. What I'll do is I'll create another list, another file, array, or we'll take an array demo. Okay, let names equal to. You can take names, right? Some names we are keeping. Now, if you want only the indexes of it, suppose I write keys equal to names dot keys. But if you print and see this keys, print means
console.log keys, it will not show you 0, 1, 2. It will show an iterator object. It will say it's a iterator object. Actually, that iterator object acts like a pointer in your original array. And when you use that pointer in a for loop, that pointer keeps pointing to the next element, and it will keep returning you the index. Okay? See here. Instead of printing, I'll show you how to use it in a for loop. See, is it giving array iterator? So generally that array iterator, we should not print like this. Make use of it in a for loop. See, for of. Okay? And here I'll give that keys. Okay, so now if I'm printing that each element, console.log, instead of element, I'll take key of keys. Okay, so when I'm printing that key, you'll see 0, 1, 2, 3 like that. Is it giving indexes? This index is 0, index 1, index 2, index 3, like that. Okay, same way, if I do values equal to names dot values, values भी है, मैंने स्लाइड पे नहीं लिखा, एंड ये values भी एक इटरेटर ही होगा. ओके, एंड ये इटरेटर भी अपने ओरिजिनल अरे में कहीं पॉइंट कर रहा है, एंड जब आप लूप में यूज करोगे वो इटरेटर खुद ही आगे आगे पॉइंट करके नेक्स्ट वैल्यू आपको लाके देता है. राइट, iterators are like pointers, and when you use them in a for loop it will keep advancing to the next value. यहां भी अगर मैंने ये for loop यूज किया, okay, instead of element I'll say value of values and print and see console.log value. It will display each value. बट अब कहोगे ये इतना लेंदी क्यों करना, डायरेक्ट ही अरे चलता था, बिकॉज डायरेक्ट अरे में से भी वैल्यू ही मिलता है. ठीक है, बट दिया है ऐसा एक मेथड अवेलेबल है. देखो, इज इट गिविंग ओनली वैल्यूज, एंड और एक है कॉल्ड एंट्रीज, जो अभी मैंने बताया. entries equal to name dot entries. Okay, on this also if I apply this for loop, for अभी एलिमेंट की जगह पे एंट्री देता हूं of entries, and I'll print that each entry console.log. Each entry when you'll print, it will be again an array of only two values. Each entry जब आप print करके देखोगे तो वो entry of क्या है, of two values array, and in that each array there will be index and the value, index and the value. See, I didn't save this. Can you see? एक टू वैल्यूज का अरे लाके देता है, एंड वो टू वैल्यूज के अरे में क्या है, इंडेक्स एंड द वैल्यू, इंडेक्स एंड द वैल्यू. इंडेक्स बोलने की जरूरत पे इसको हम स्पेसिफिकली की एंड द वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू. गेटिंग गाइस? इसको डायरेक्टली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहां अनपैकिंग कंसेप्ट होता है. डायरेक्टली यहां स्क्वायर में दो वेरिएबल्स डालोगे ऐसे, के कॉमा वी भी चलता है, तो डायरेक्टली द वैल्यू विल गेट, यहां से एक एक करके क्या आते जाएगा, दो वैल्यूज का एक अरे आते जाएगा. यहां से फेच करते समय क्या आएगा, ये दो वैल्यूज का एक अरे, जिसमें इंडेक्स मैंने की एंड द वैल्यू, की वैल्यू, दैट इज गेटिंग अनपैक्ड इन दीज टू वेरिएबल्स, एंड डायरेक्टली आप वो दो वेरिएबल्स प्रिंट करके देखो. आई एम प्रिंटिंग के, देन कोलन एंड देन वी. सी, मीन्स यहां से फेच क्या हो रहा है, एक दो साइज का अरे, एक हर बार एक दो साइज का अरे आता है, इंडेक्स एंड द वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, और वो दो साइज का अरे हमने ये दो वेरिएबल्स में अनपैक किया. तो वो दो साइज के वेरिएबल मीन्स देखो ऐसे, ठीक है, आई विल शो यू. लेट स्क्वायर एक्स कॉमा वाई लिखा इक्वल टू 10 कॉमा 20. तो व्हाट हैपेंस इज
ये अरे के दो वैल्यूज जो है ये दो वेरिएबल्स में अनपैक हो जाते हैं. तो later if you check what is in x 10, what is in y 20, get it? So same thing is happening here. From here one by one entry is coming. Each entry दो वैल्यूज का है, इंडेक्स एंड वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू. वो दो वैल्यूज का अरे ये दो वेरिएबल में अनपैक किया एंड डायरेक्टली प्रिंट किया. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. फिर वो कीज, एंट्रीज, वैल्यूज, वो मेथड्स क्लियर. देन वी हैव वन मोर मेथड कॉल्ड फ्रॉम. मीन्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ अरे from some another array like object. It is like a copy constructor. क्लोनिंग करना है कि मेरे पास ऑलरेडी एक अरे है एंड वो अरे लाइक ऑब्जेक्ट से एक दूसरा अरे क्रिएट करना है. यू कैन यूज फ्रॉम. See, the array.from method returns a new array object. It will give you a new array object from an object with a length property or any iterable object. Any iterable will do. So generally हम array से array create. So already if you have a array, so you can create another array from that array. String भी चल जाएगा क्योंकि string भी iterable है. Understanding? You can give string as well. See, let a1 equal to, this is my array 10, 20, 30, and let a2 equal to a1 dot from array dot from. ये directly static method है. You have to access it in context of directly array object. So array dot from and then give a1. It will create a duplicate. And दोनों को print करके देखोगे तो दोनों duplicate रहेंगे एक दूसरे के. Array dot log a1 and console dot log a2. Both will be duplicate, but independently you can modify. अभी a2 या a1 का ही clone रहेगा. Clone means a copy. बट यू कैन मॉडिफाई देम इंडिविजुअली. A1 को चेंज किया तो A2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, A2 को चेंज किया तो A1 में नहीं. इनिशियली बोथ आर सेम. सी, करेक्ट? एंड यू कैन ट्राई इट. A1 में कुछ चेंजेस करो, A1 में पुश करो. ओके, A1 डॉट पुश 40 and you can print and see both the arrays. See, it has added 40 only in A1, not in A2. क्यों? क्योंकि अरे डॉट फ्रॉम A1 ने A1 का क्लोन क्रिएट किया. क्लोन मीन समझ में आया ना? डुप्लीकेट. It creates a duplicate of A1 and gives you. Memory is different. A1's memory is different, A2's memory is different. And therefore, when you add 40 in A1, it is only in A1, not in A2. Initially, both are having same value. क्योंकि वो क्लोन क्रिएट किया ना, A1 से ही एक डुप्लीकेट क्रिएट किया. ठीक है? तो I hope this from is also clear to you. Then we have some sorting methods, like if you want to sort the elements of your array, getting? So there is one sort method. See, by default, it will do ascending sort. Default. So this is your array, and you are writing fruits.sort. This is an array of strings. Okay, just understand this. This is first. Sorting means what? I hope you know it. नहीं तो कहोगे वहां से शुरू करो. Sorting means a process of arranging elements in increasing order or decreasing order. Process of arranging the elements in some order. And वो order generally होता है ascending order or descending. So that process is called sorting. So what is sorting? Sorting is a process of arranging elements in the array in some order. Now that order can be increasing order, that is ascending, decreasing order, that is descending. So default, it is going to sort in ascending only, default. देखो, let fruits equal to, this is the list of array of strings, and then I'm writing fruits.sort. And it is in place sorting. Huh? In place sorting means समझ में आया ना? It will do sorting
In which manner? In the original array only. In place sorting. In place sorting meaning it is not going to return you a new array. It will do the sorting in the original array only. Okay, so I hope you are hearing me, guys. Yes or no? ठीक है, Jis and Anand. So fruits dot sort, it will sort this. By default, it is ascending. So देखो ascending का तो apple पहले आया, फिर banana आ गया, फिर mango आ गया, and फिर orange, right? And अगर आपको sorting on some custom sorting function देना है, correct? This function will be used internally for sorting purpose. ओके तो देखो मैंने अगर एक फंक्शन भेज दिया, दिस इज योर एरो फंक्शन a comma b, two argument, and you're just subtracting it. If it is zero means they both are same. If it is negative means a is lesser than b, and if it is positive means a is greater than b. ठीक है, this is a lambda function or arrow function, and this function internally sort algorithm will use for doing sorting. And when it is doing sorting, it has to do comparison ना guys. Sorting तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है. Sorting के लिए दो दो वैल्यूज क्या करने पड़ते हैं, कंपेयर, एंड कंपेयर करते समय उनको स्वैप भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इन विच ऑर्डर यू वांट. तो सेम वे, एंड डिसेंडिंग चाहिए तो यू कैन जस्ट डू ऑपोजिट, b माइनस a करो, इंस्टेड ऑफ a माइनस b गिव b माइनस a. ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूं. Let NOS equal to, some numbers are there. By default, the sorting is ascending. If you print and see, and it is applicable for array of strings as well, huh, guys. ठीक है, इसी में ही मैं दिखा देता हूँ. See, okay, NOS dot sort. Huh. Now you may say why it has done sorting like this. I'll tell you. Yes or no? You may think this, why the sorting is like this. So why? Because when we do sorting, the sorting is right, but in which context? ये थोड़ा सा confusion होगा. See, for us, it is a number array, but whenever the sorting is done, your JavaScript automatically converts it into a string array only. See, guys, though you have given numbers, ये भले हमने numbers दिए हैं, we have given numbers, but still your JavaScript will treat them as strings. इसको string form में ही treat करेगा while sorting. Understanding? And therefore, when you are doing sorting of these strings, it will be sorted in which manner? Lexicographically, character by character. So it will take first character. Now, first character, one, three places you have: 10, 110, and 103. So first what will come? 10. Then what will come? 103. And then 110. Character by character sorting. So one, first place, one, one, one. Three places you have. So all three will come at one side, and as three, all three have one, one, one. So second will be taken. Second, 0, 0, 1. Now it will take two. So two means 23. Then it will take, starting with 3. Starting with 3 we don't have. Starting with 4 we have. Then starting with 5, 56. Starting with 6, 6 we don't have. Starting with 7 we have, that is 7. Then starting with 8, that is 89. Starting with 9, 90. And this way the sorting is. And can you see? That is what the result. 10, 103, 110. 10, 103, 11. Why? Because for us it is a number, guys. हमें लगता है कि ये numbers है.
बट जावास्क्रिप्ट जब भी अरे को सॉर्ट करने जाता है, ऑटोमेटिक सबको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा एंड इट विल सॉर्ट ऑन द स्ट्रिंग बेसिस ओनली। स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग करेगा। अंडरस्टैंडिंग और नो? इट विल सॉर्ट इट ऑन अल्फाबेटिक बेसिस, लेक्सिकोग्राफिकली। तो इनको वो स्ट्रिंग ट्रीट करता है एंड स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉर्टिंग करेगा, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर वन है, वन है, वन है, तीन जगह पे वन है, तो वो एक साथ आ गए। फिर सेकेंड कैरेक्टर देखेगा, दैट इज जीरो जीरो एंड देन वन, दिस। Then starting with two, then starting with three we don't have, four we have, five we have, six we don't have, seven, eight, and then nine. This way these nine values are sorted. तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया ना। एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेड ऐसे सॉर्टिंग नहीं था, क्यों? क्योंकि ये नंबर्स है, तो वी वांट इन अ नेचुरल ऑर्डर। हमें नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग चाहिए। वी डोंट वांट विच सॉर्टिंग, दिस इज स्ट्रिंग सॉर्टिंग, अल्फाबेटिक सॉर्टिंग हुआ है। लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टिंग, it has done sorting on the lexicographical basis, character basis, guys. Okay, so in this context, if you want it as a which type of sorting, guys, in which manner, किस manner में मुझे sorting चाहिए? Natural order sorting. Natural means numbers लेना चाहिए। Smallest number 7 है, getting? फिर next 10 है, next is 23, next is 45, next is 56, next is 89, next is 90, next is 103, next is 110. करेक्ट? तो दिस वे नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग चाहिए, तो फिर कंपैरिजन का फंक्शन तुम्हें भेजना पड़ेगा। यू हैव टू सेंड द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन। करेक्ट? तो वो आप लैम्बडा फंक्शन भेज सकते हैं। तो यहां समझ में है, व्हेन आई क्रिएटेड एन अरे, आई सॉर्टेड, आई एम प्रिंटिंग इट एंड यू गॉट दिस ऑर्डर। तो why you have got this order? Because it has treated all of them as string. इन सबको string treat किया एंड string के बेसिस पे सॉर्टिंग किया। करेक्ट? तो अगर ये नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग चाहिए, तो मैंने कहा आपको खुद का एक कंपैरिजन फंक्शन भेजना पड़ेगा। ओके, तो आई एम सेंडिंग टू आर्ग्यूमेंट फंक्शन, एरो फंक्शन, एंड जस्ट वी आर सबट्रैक्टिंग इट। तो अभी यहां क्या होगा, जब दो दो वैल्यूज कंपेयर हो गई, तो वो उनको नंबर्स में कन्वर्ट करके सबट्रैक्शन करेगा। सबट्रैक्शन अगर जीरो आ रहा है मींस बोथ द वैल्यूज आर सेम, पॉजिटिव है तो ए बी से ग्रेटर है, तब स्वैप करेगा, एंड नेगेटिव है तो ए बी से लेसर है, तो इट विल नॉट डू स्वैपिंग। नाउ इफ यू चेक योर अरे, console.log and check your array, ठीक है? In this case, it will do the natural order sorting and ascending it. So now you will get 7, 10, 23, 45, 56, 89, 90, 103, 110. अभी ये लेक्सिकोग्राफिकली नहीं है। कैन यू सी? सी 7, 10, 23, 45 लाइक दैट। ओके, एंड यही अगर मैंने ये कंपैरिजन फंक्शन थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लाइक a माइनस बी की जगह पे b माइनस ए किया, इट विल डू डिसेंडिंग सॉर्ट। ओके, सी 110, 103, 90, like that. Okay, so this way we can do sorting. But please remember that one criteria, वो एक condition याद रखना है, that in JavaScript, whenever you are doing sorting of any array, by default the sorting is string basis, lexicographically, natural order में नहीं होता है। Getting? वो कैसे करेगा? It will not do in the numbers basis. It will take it as a string and lexicographically comparison होगा। Understanding? Lexicographically meaning alphabetic way. तो इनको वो स्ट्रिंग ट्रीट करता है एंड स्ट्रिंग वाइज सॉर्टिंग करेगा। देखो, अगर इसको डायरेक्टली ये कंपैरिजन फंक्शन नहीं भेजा रहता था, तो इट विल टेक 100,
1, then 40, sorry, 100, 1, 25, make 10 also it will take. It will give sorting like this, 100, 10, 1, then it will take 25, right? 40, and then 5. Because text-based comparison, alphabetically. तो अल्फाबेटिकली तो पहला अल्फाबेट 111 है तो ये एक साथ फिर 2 फिर 4 फिर 5 बट न्यूमेरिक चाहिए रहेगा तो यू हैव टू गिव योर कंपैरिजन फंक्शन ठीक है ओके तो आई होप दैट पार्ट इज आल्सो क्लियर राइट और नो sorting is also clear to you now if you want to combine more than one array बहुत सारे अरेज हैं एंड इनको सबको ज्वाइन करके एक न्यू रिजल्टेंट अरे क्रिएट करना है करेक्ट तो चांसेस है कि एक अरे में कुछ वैल्यू है दूसरे अरे में तीसरे एंड इन सबका रिजल्ट मुझे कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्टेंट अरे क्रिएट करना है ओके तो यू कैन डू इट बाय मेथड कॉनकैट मेथड यूज करना है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस अरे वन डॉट कॉनकैट एंड देन पास one or more arrays a2 a3 a4 जितने it will combine the elements of A1, A2, A3 all and return you a resultant array. एक resultant array आएगा and इस resultant array में क्या रहेंगे elements of all these arrays. ठीक है see array 1 1 2 3 array 2 4 5 6 array 1 dot concat array 2 so it is going to combine the elements of array 1 and array 2 1 2 3 4 5 6 ओके एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ दो अरेज को कनकैट यू कैन कनकैट मल्टीपल अरेज देखो ऐसे अरे वन डॉट कनकैट अरे टू अरे थ्री गेटिंग ओके तो आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से रिजल्टेंट अरे प्रिंट करके देख सकते हो क्विकली लाइक ये सॉर्टिंग वाले में ही मैं करके दिखाता हूं सपोज एक फ्रूट्स अरे है एप्पल ऑरेंज मैंगो grapes suppose another array is there of colors suppose red blue green okay another array is there of names right ram anand listen bob jack okay now names is already there so I'll take names one now I want to combine them into a resultant array a equal to first fruits dot concat and then I'll pass next arrays colors and names one okay and you can print and see console.log a so in that a you will have all the values of fruits colors names सब कुछ कंबाइन होकर आपको एक रिजल्टेंट आ गया है गेटिंग पहले फ्रूट्स आ गया फिर कलर्स आ गया फिर नेम्स आ गए सारे कंबाइन हो गए तो दैट इज द बेनिफिट कितने सारे फंक्शंस इन्होंने बना के रखे राइट और it is the programmer's skill that how they are going to make best use of these function methods जैसे आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो वो टास्क अचीव करने के लिए इन्हीं फंक्शंस का कैसे हेल्प लेना है दैट इज योर स्किल वो भी आपका एक्सपर्टाइज है आपने ये सारे फंक्शंस समझ लिए तो इसको अप्लाई कैसे करना है दैट इज योर स्किल ठीक है देन वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड स्लाइस हमने और एक मेथड देखा है कॉल्ड स्प्लाइस स्प्लाइस भी देखा था स्प्लाइस इज फॉर इंसर्टिंग डिलीटिंग और रिप्लेसिंग समथिंग इन योर अरे मींस आपके अरे में कोई दूसरा अरे इंसर्ट करना रहेगा या अरे में कुछ एलिमेंट्स किसी दूसरे अरे से रिप्लेस करना या अरे में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट करने तो वी यूज स्प्लाइस okay and slice is just to get the part of your array as a copy array it will return another copy array
Means you have an array and you want the elements in that array from one position till another. Another is exclusive. तो याद रखो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का मुझे एक कॉपी अरे क्रिएट करना है, अनदर कॉपी अरे. देन वी यूज स्लाइस. कंसेप्ट ये है ना, स्लाइस जब हम ब्रेड का स्लाइस बोलते हैं तो ब्रेड का लॉफ रखा है तो उसमें से आपको जितना स्लाइस चाहिए, एक स्लाइस चाहिए, दो, अकॉर्डिंगली आप उठा लेते हो ना. कंप्लीट लॉफ ऑफ ब्रेड इज केप्ट. तो सपोज इसमें से दो स्लाइस तो कंटिन्यू दो निकाल लेते हो, तीन चाहिए तो कंटिन्यू तीन निकालते हो, एक चाहिए तो एक, तो स्लाइसिंग ही कर रहे हो ना. बट हियर व्हाट हैपेंस इज it is just creating a copy from that element till the another element and returns you a new copy array of those elements. ठीक है, तो स्लाइस कैसे वर्क करेगा वो देखो. एग्जांपल्स देता हूं. फर्स्ट, दिस इज योर array of fruits. See carefully, yeah, guys. Let fruits equal to, this is array of fruits. Fruits dot slice 2 comma 4. Okay, it will start from 2 till 4. 4 exclusive. Always remember, whenever you are giving end index, start index, end index, always remember end index is exclusive. It will start from 0, 1, 2, 3, 4. अब मैंने कहा ना 4 exclusive, तो 3 पे ही रुकेगा. तो इतने ही दो एलिमेंट्स का एक कॉपी देगा. देखो वो सिट्रस में है, करेक्ट, ऑरेंज एंड मैंगो, ये दो एलिमेंट्स का एक कॉपी अरे क्रिएट हुआ सिट्रस, एंड दैट यू आर प्रिंटिंग. इफ यू चेक योर ओरिजिनल अरे में से कुछ डिलीट वगैरह हुआ नहीं है, ओरिजिनल अरे इंटैक्ट है. अंडरस्टैंडिंग. इन दिस यू कैन गिव ओनली स्टार्ट नो एंड, चलता है ना. यहां अगर आपने 2 दिया है बट 4 नहीं दिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड गो टिल द एंड ऑफ द अरे. पूरा अरे का जितना भी बचा है वो सब ले लेता है. तो वो भी पॉसिबल है. एंड निगेटिव भी दे सकते हो, यू कैन गिव नेगेटिव इंडेक्सेस ऑल्सो. बट नेगेटिव इंडेक्स दिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट. लेफ्ट से 0, 1, 2 है, ठीक है, एंड राइट से -1, -2, लाइक दैट, -3, -4, -5. तो देखो यहाँ fruits dot slice -2. तो from where it is starting, -2, but end you have not given, so it will go till the end of the list, end of the array. तो -2 से स्टार्ट किया बट वहां से किधर तक, एंड ऑफ द अरे. तो एंड ऑफ द अरे मीन्स मैंगो एंड ग्रेप्स. ठीक है, तो इसमें आप और कॉम्बिनेशंस करके देख सकते हो कि सिर्फ स्टार्ट दिया है एंड नहीं. ओके, या फिर दोनों नेगेटिव दिए है तो कैसे वर्क होता है. ठीक है, कॉम्बिनेशंस अलग है. But please remember, in this, it is not going to make any change in the original array. आपका original array as it is रहने वाला है. It is just going to return a copy of which elements, the elements in that range. ये start से लेके ये end तक जितने element है उसका एक copy create. ठीक है? See, let NOS. I'll take numbers, but NOS है शायद. Or we can take another. Array demo1 dot HTML. NOS equal to. Some values are there, 10, 5, 78, 90, 23, 100, 110, 45, 79, 80, 34, 105. Whatever, few elements are there. Now, let NOS1 equal to NOS dot slice, and suppose I'm giving 3, 6 console dot log NOS1 एंड NOS भी प्रिंट करके देखो, इससे प्रूव होगा NOS ऑल्सो दैट ओरिजिनल अरे में से कुछ भी डिलीट नहीं होगा एनीथिंग. तो 3, 6 है गिवन, 0, 0, 1, 2,
3. It will start from 90. 3, 4, 5, 6 exclusive. तो 90, 23, 100 इन तीन एलिमेंट्स का एक कॉपी अरे क्रिएट होगा विच विल कम इन NOS 1. सी, ये अपना ओरिजिनल अरे है, वैसे का वैसे ही रह गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ. बट इज इट रिटर्निंग 90, 23, 100? ये थर्ड पोजीशन है, 0, 1, 2, 3. थर्ड पोजीशन इज 90, 3, 4, 5. 6 is exclusive. Always remember. In this you can do variations like 3 दिया है but 6 नहीं दिया है. तो it will start from 3 till the end. देखो 3 से शुरू किया till end. नेगेटिव इंडेक्सेस भी दे सकते हैं, लाइक मैंने दिया है -5. ठीक है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -5, -1, -2, -3, -4, -5, 45. तो यहां से लेके एंड ऑफ द लिस्ट. सी, 45 से शुरू किया टिल एंड. इसमें भी दोनों निगेटिव भी दे सकते हो, लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम -7 टिल -2. तो शुरू कहां से किया? -7, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब -7 टू -2. अब ये -2 34 है, तो वो एक्सक्लूसिव है, तो उसके जस्ट पहले तक. अंडरस्टैंडिंग ना? -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो -7 से लेके -2 तक, बट -2 एक्सक्लूसिव है, ये तो मैं कितनी बार बताऊं. तो -2 के पहले तक, तो 100, 110, 45, 79, 80, उतनी ही वैल्यूज. सेम ही क्यों? सी, 100, 110, 45, 79, 80. So this way you can give different combinations. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्लाइसिंग. स्लाइस कैसे करना है. ठीक है, देन कन्वर्टिंग अरे टू स्ट्रिंग. नाउ यू हैव एन अरे ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल दोज एलिमेंट्स यू वांट टू जॉइन विद सम स्ट्रिंग. तो एक्चुअली जॉइन इज नॉट अ मेथड ऑफ अरे, वो अरे का मेथड नहीं है, वो स्ट्रिंग का मेथड है. ओके, एक्चुअली वो मेथड स्ट्रिंग का है, बट वो स्ट्रिंग के मेथड को अरे पास करना है. Means you have some string, whatever string, dot join, and you have to pass that array. Okay, just let me check whether it works this way, because I think join is in string also. But what I want to do, एक array है मेरे पास, और array के सारे एलिमेंट मुझे किसी string से join करके एक string बनानी, एक new string create करनी. ठीक है, yes, it is a array method, not string, but string में भी है, yes, a method, but here it is in, this is a method of array only. So fruits dot join, fruits is a array dot join, it will join all the element. Default it will join with comma. Default सारे एलिमेंट किससे ज्वाइन होता है? कॉमा. बट अगर और किसी से ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट यू कैन पास हियर, fruits dot join, and the string you can give. Whatever string you give, it will join all the elements of that array with that. Correct? But there is a join method in string as well. String में भी होता है, ये array का method है. ठीक है, तो whatever array dot join, all the elements of that array are concatenated and you get a single string as an output. ठीक है, in this only suppose, यही एग्जांपल में मैंने अगर लिखा let s equal to nos dot join, so is it going to join all the elements of this array? Internally इन सबको string ही consider करेगा, इन सबको string में convert कर देगा, and it will join all of them with a comma. When you don't give any separator, by default it is comma. तो comma से ही सबको join करके एक single string बना के देगा, and you can print and see that string, console.log s. See, is it returning one single string where all the elements of the array are joined with comma? But instead of comma, if you want something else, like 3 stars देता हूं,
Each and every element will be joined with 3 star. Can you see? 10, 3 star 5, 3 star 78. These are for reporting and all, reports वगैरह generate करने हैं. तो उस समय ये useful होता है. ठीक है? तो all the values are joined with this separator and it returns a single string and you can work on that single string. ठीक है? And the other way, like if you have a string and you want to split the string into array, इसका टोकन बनाना है. ये हमने देखा है एक्चुअली. ये हमने स्ट्रिंग्स जब पढ़ा ना तब देखा है. Like if you have a string, okay, and you want to split that string at different separator. Separator आप लोग regular expression भी दे सकते हैं, regex भी दे सकते हैं. So wherever it will find the separator, there it will split it into tokens or chunks and it will return an array of that chunks. वो chunks का क्या return करेगा? Array. Okay. तो split converts string to array. तो actually ये split ये string की method है. Get it? You have a string and default split is at space. देखो. Let suppose you have some sentence like that. Let us learn JavaScript. Okay, JavaScript ES 6. Now I want to split it into words at the place of space. Space की जगह पे split कर देंगे. तो words equal to sentence dot split. तो वही कहा मैंने कि it is by default it is a method of string. String इसको invoke और वो array लाके देगा. आपको लाके देगा array of words. Let us learn like that. See. Console.log words. Now here what has happened? By default you have not given the separator. Separator नहीं दिया तो इसने पूरा sentence ही एक token ले लिया. तो आपको separator देना compulsory है. तो like I am giving separator space. Separator space दिया. तो जहां जहां space मिलेगा वहां ये लिस्ट को स्प्लिट करेगा into token. Let एक token, us एक token, learn एक token. And वो tokens का array आने वाला है. You will get an array of tokens. Can you see? Let us learn JavaScript. So it is up to you कैसे चाहिए. Understanding? यहां भी आप चेक करके देख सकते हो. अपने arrays को किसमें convert कर दिया था. String में by joining 3 star. You can again split it into words. Into words means into numbers like this. Console.log and directly वो array print कर रहा हूं. s.split and split पे मैं 3 stars देता हूं. S means ये string है हमारी, ये वाली string, जिसमें सारे array के नंबर ज्वाइन हुए थे with 3 star. मैं अगेन वही string को 3 star पे split कर रहा हूं. तो जहां जहां 3 star split, तो 10 आएगा, 5 आएगा, 78 आएगा. उन tokens का एक array आ जाएगा. See, 10, 5, 78. And can you see it returns an array of string only. By default, it considers it as an array of string. ठीक है? See. So example, like let text is equal to hello world JavaScript. This is my sentence. Text is a string. So split is a string method. Huh? So text dot split and where to split at the place of space. This is a separator. So wherever space, there it will split it into words. Okay, so you'll get one token hello, one token world, one token JavaScript. So it will return your array of 3 tokens. And when you print and see these words, it is an array of 3 tokens. And if the split you give as blank, means empty string, not blank, empty string, it will split that string at each character. एक एक character की जगह पे ही split कर देगा. देखो, example, let str equal to hello and then console.log
str.split, and I'm giving empty string. It is going to split that string at each character, and आपको एक array of characters आ जाएगा. See, HELLO. Actually, ये हमने string पढ़ा तब भी पढ़ा है. In case of string, we have studied this. String के context में ये पढ़ा था. ठीक है? Okay, so I hope you got it. Concept clear. Then there is one more function called for each. ठीक है? It will call one arrow function for each element of your array. ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, ये मैपिंग का काम नहीं करता. जैसे मैप था, it is not going to return your new array. It will just call one lambda function, lambda means arrow function, for each element of your array. यहां आप लोग एक arrow function भेज दोगे, x equal greater and some task, whatever task. So what it will do, it will call this arrow function for each element of your array. array में जितने एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होगा. कितना काम एक लाइन में हो गया, राइट और नो? अगर किसी ने कहा कि ये अरे के एक एक एलिमेंट प्रिंट करो, एक अरे है और अरे के ईच एलिमेंट प्रिंट करो, ऐसा अगर कहा गया, राइट? तो व्हाट यू विल डू, you will write for loop, ना? You will write a for loop, and for loop में एक एक एलिमेंट निकालोगे, वो प्रिंट करोगे. वो काम कैसे for each तुम्हारे लिए कर रहा है. This is a declarative again logic. Declarative way meaning your understanding. You are just telling that please call this function for each element. How to call it for each, वो for each देख लेता है. ठीक है? तो इस फंक्शन को पास क्या होगा, ईच एलिमेंट पास होगा. आपको इंडेक्स भी पास करना है, कर सकते हो, ईच एलिमेंट, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स ऐसा भी दे सकते हो. एलिमेंट एंड द इंडेक्स, ईच एलिमेंट एंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट. नाउ इज इट गोइंग टू कॉल दिस एरो फंक्शन, ये वाला जो एरो फंक्शन है, ठीक है, will it call this arrow function again and again for each element of your array fruits? Yes. पहली बार कॉल होगा तो इसमें एप्पल जाएगा और 0. हमने एक्शन क्या लिया है, 0 एप्पल प्रिंट किया. अगली बार बनाना 1, अगली बार ऑरेंज 2, लाइक दैट. ठीक है? सेम काम आप लोग खुद भी लॉजिक लिख के कर सकते हो. बट क्यों लिखने का है लॉजिक, जब वो लॉजिक तुम्हारे लिए कोई और इंप्लीमेंट कर रहा है. Try to write all the codes in a declarative way. Maximum declarative style से करने की कोशिश करो. Instead of you writing all the legacy logics or all the traditional logics. ठीक है? तो I hope it is clear. यहां भी मैं quickly दिखा देता हूं. Okay, we have already, suppose, यहां मैं लेता हूं let names equal to, some names we will put. And someone tells you print this all names, तो आप लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप लिख के प्रिंट कर सकते हो, यस नो? बट कैसे एक लाइन में ही काम हो जाएगा. नेम्स डॉट फॉर ईच एंड जस्ट पास योर लैम्डा फंक्शन, गेटिंग x equal greater console dot log x. will it keep calling your lambda function? ये जो lambda function है एक आर्ग्यूमेंट का, वो अगेन अगेन कॉल करेगा फॉर हाउ मेनी टाइम्स, ईच एलिमेंट ऑफ योर नेम्स. सी, इज इट प्रिंटिंग? अब सिर्फ नेम्स नहीं, मुझे उसका इंडेक्स भी चाहिए, तो फिर 2 आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो. यहां 2 आर्ग्यूमेंट x कॉमा y, तो y में इंडेक्स होता है, तो y कॉमा फिर एक कोलन फिर कॉमा x. चेक करके देखो. सी, तो एवरी टाइम व्हाट विल कम इन x, एलिमेंट एंड द इंडेक्स. राम 0, सीता 1, भरत 2, लक्ष्मण 3. ओके, तो कैसे अपना फॉर लूप लिखने का काम कितना कम हो गया. आपको सिर्फ एक एरो फंक्शन भेज देना, and this for each will call this arrow function
अगेन एंड अगेन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ योर अरे। आपके अरे के ईच एलिमेंट के लिए ये एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो पहली बार वो कॉल करेगा राम 0, सीता 1, भरत 2, लक्ष्मण 3, and it will perform that task, isn't it? It's making your work lesser. तुम्हारा काम कैसे कम कर रहा है, ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है। And then one last part is there, that is flattening your array. Like if you have a nested array and all, and you want to convert that array into one single array. So for that also there is a method. This is array of array. Is it containing array of array? Main array. Then one is one element. Then this is again an array. Then this is again an array, and inside that array one element and again an array. So it is a nested array. Nested array means inside array there is again an array. Again one more array, and inside that also again there is an array. So it is multi-level array, nested array. And you want to convert it into one dimensional. So you can use this flat method, nested.flat. But flat does it only at one level. It will take 1, 2, 3, 4 and this one. एक लेवल तक ही जाएगा, पहले लेवल तक ही जाएगा। देखो तो ये वैसे ही रहा। तो नेस्टेड जितने भी है सबके एलिमेंट्स लेकर एक वन डायमेंशनल अरे बनाना है। देन यू हैव टू पास इंफिनिटी ओवर हियर। सो व्हेन यू पास इंफिनिटी, कितना भी नेस्टेड लेवल रहने दो, इट विल कन्वर्ट इट टू 1D अरे। करेक्ट? एक वन डायमेंशनल अरे में लाके रख देगा। ए इक्वल टू 10, अंदर वापस 20 एंड 30 है, मे बी यहां 40 है, इसके अंदर 50, 50 के अंदर वापस एक अरे है। ओके, 60, 70, 80 है, यहां कहीं तो 90 है, लाइक दिस। तो इज इट अरे ऑफ अरे, अरे ऑफ अरे ऑफ अरे, लाइक दैट, नेस्टेड अरे। तो ये पहले अरे में 10 एक एलिमेंट है, ये भी एक अरे है, ये भी अरे, ये अरे के अंदर भी एक अरे एलिमेंट है। करेक्ट? एंड इफ यू राइट बी ए डॉट फ्लैट, बट ये इनफाइनाइट फ्लैटनिंग नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट लेवल फ्लैटनिंग में 10, 20, 30, 40, 50, ये पूरा अरे 80, 90, फर्स्ट लेवल। ठीक है। यू कैन प्रिंट एंड सी console.log b, ए भी प्रिंट करके देख सकते हो। सी, सिर्फ पहले लेवल का फ्लैटनिंग हुआ है। अगर इनफाइनाइट फ्लैटनिंग चाहिए तो हियर आई टोल्ड यू, यू हैव टू पास इंफिनिटी। इंफिनिटी एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे nan होता है। nan is one value in JavaScript. It's a value representing some value. यहां देखो, has it done infinite flattening? मीन्स अरे के अंदर जैसे अभी इस अरे में और एक अरे है, लाइक 1, 2, 3। ठीक है। तो अरे के अंदर जितने भी है सबको फ्लैटन करके एक सिंगल वन डायमेंशनल अरे ला के दिया। Getting? So this way you can do flattening. I hope this is clear. So this was all about arrays. Now in the next session, if possible, some examples on arrays we will solve, some exercise, and then we will dive into some other remaining objects like math object, date object, जो बचे हैं, then creating our own object, खुद के objects कैसे बनाना है, JSON concept देखना है। ठीक है।